ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 65 of the Ayodhya Kandam, which has 29 verses. When the emperor did not wake up, even though roused by means of the panegyrists sung by bards, accompanied by musical instruments played upon for that same purpose, the ladies of the gynecium concluded by other means that the king is dead, and soon after commences the loud wail of Kausalya, Sumitra, and the other queens. आज हम पंचाशिष्टम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। बंदी जनों का स्तुति पाठ राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करण विलाप। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरे वा अपारे अहनि बन्दिनः पर्युपातिष्ठः तत्पार्थिव निवेशनम्। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदी जन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। When the night had ended, they arrived forthwith at the residence of the aforesaid emperor early next morning. Panegyrists, highly cultured minstrels and bards, whose information about genealogy tables, etc., was of a superior kind, as well as singers, capable of distinguishing the difference in the tones of a veena and singing according to their different styles. सूताः परमसंस्कारा मागधाः च उत्तमश्रुताः गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्त पृथक् पृथक्। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मगध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। राजानं स्तुवतां तेषाम् उदात्ताभिहिताशिषां प्रासादा भोग विस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवर्तत। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मगध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। The sound of the praises uttered by the aforesaid bards and others who were glorifying the king and by whom benedictions were pronounced in a loud voice actually pervaded the interior of the palaces in the form of an echo. ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पणिवादकाः अपदानन् उदाहृत्य पाणिवादान् यवादयन्। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने में ही पणिवादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। While the aforesaid minstrels for their part were engaged in uttering praises, those who sang with the clapping of hands thereupon clapped their hands, recounting the marvelous feats of the rulers of Ayodhya. तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाखास्ताः पञ्चरस्ताश्च ये राजकुल गोचराः। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद शूक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। Nay, roused by that sound of clapping, birds appearing in the royal palace and perched on the boughs of trees, as well as confined in a cage, uttered forth their note. व्याहृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निस्वनाः आशीर्गेयं च गातानां पूरयामास वेश्मतत्। शूक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वे सारा भवन गूंज उठा। The holy words uttered by the brahmanas and parrots
as well as the notes of the veena and the benedictory portions set to music of epic verses composed by the Brahmanas in praise of the king, filled that palace. ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः स्त्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्तुर्यथा पुरा. तदंतर सदाचारी तथा परिचय कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियां और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए. Then attendants, mostly consisting of women and eunuchs of unimpeachable conduct and proficient in service, stood ready to serve as usual. हरिचन्दन सम्पृक्तमुदकं काञ्चनैर्घटैः आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथा कालं यथाविधि. स्नान विधि के ज्ञाता भृत्य जन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए. Servants who knew how to conduct the bath of emperors brought at that appropriate hour and in the prescribed manner water scented with sandal paste in pitchers of gold. मङ्गलालम्बनीयानि प्राशनीयान् उपस्करान् उपनिन्युस्तथा पुण्याः कुमारी बहुलाः स्त्रियः. पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आई. Virtuous women, largely consisting of virgins whose very sight is believed to be propitious, likewise brought cows, etc., whose very touch is considered to be auspicious, articles worth sipping the first thing in the morning, the water of the holy Ganga, waters in which the feet of the deity have been washed, and so on, and articles of dress and toilet, etc. सर्वलक्षण संपन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुण लक्ष्मीवत् तदभूताभिहारिकम्. प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम अभिहारिक है. वहां लाई गई सारी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुणों से युक्त तथा शोभेमान थी. All that was worth bringing within the sight of the emperor at the time of his waking for his good luck, and was endowed with all the auspicious characteristics, and all that was praiseworthy of excellent quality and possessed of charm, was kept ready in accordance with the scriptural ordinance. ततः सूर्योदयं यावत् सर्वं परिसमुत्सुकं तस्तावन् उपसंप्राप्तं किं स्विद् इति उपशंकितम्. सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया. जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में ये शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है. Till sunrise, all the king's retinue stood immensely eager to see the king and apprehensive as to what mishap had befallen the king, who had not yet come out of the gymnasium. अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रति अनन्तराः ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन्. तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थी, वह उनके शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी. Now approaching their consort, those ladies other than Kausalya and other principal queens, for their part, who were close to the couch of the king of Kosala, began to rouse him by calling him in gentle and polite words and touching his person. अथाप्युचितवृत्तास्था विनयेन नयेन च न ह्यस्य शयनं स्पृष्ट्वा किंचित् अपि उपलेभिरे. वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया. स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी. Nevertheless, on touching his couch with reverence and skill, the ladies whose behavior on the occasion was perfectly justifiable
could not detect any sign of life whatsoever in him. ता ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञा चेष्टां सञ्चलनादिषु ता वेपतु परीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः। सोए हुए पुरुष जैसी स्थिति होती है उसको भी वह स्त्री अच्छी तरह समझती थी, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियां भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वह कांप उठी, उनके मन में राजा के प्राण के निकल जाने की आशंका हो गई। Those ladies who knew the condition of a body in slumber did not discover any throbbing in the heart, the pulse, and other organs. They were accordingly seized with tremor, apprehensive as they were about the king's life, and looked unsteady like the ends of reeds standing against a stream. प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं सञ्चकाशिरे अथ सन्देहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम् यत् तदा शङ्कितं पापं तथा जज्ञे विनिश्चयः। वह जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। Now, on seeing the condition of the emperor at that time, a certainty rose in the mind of the doubting ladies about the disaster in the form of death which was apprehended. कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते प्रसुप्ते न बुध्येते यथा कालसमन्विते। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। Being fast asleep, Kausalya and Sumitra too, who had been prostrated with grief caused by separation from their sons, would not wake up as though they had been overtaken by death. निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी, उनके शरीर का रंग बदल गया था, वह शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारीख के समान शोभा नहीं पा रही थी। Shorn of splendor and divested of her native color, nay stricken and laid prostrate with grief, Kausalya did not shine brightly as before any more than a star engulfed in darkness. कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरं न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रु लुलितानना। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी, दोनों ही निद्रा मगन हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी, उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। Lying asleep close to the king, who was now dead and therefore pale, Kausalya too did not shine brightly any more than the king, nor did Queen Sumitra, who lay asleep next to Kausalya, and whose face was bathed in tears of grief. ते च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपं सुप्तमेवोद्गत प्राणमन्तः पुरम् अमन्यथ। उस समय उन दोनों देवियों का निद्र मगन देख अंतपुर की अन्य स्त्रियों को यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए। Seeing both the aforesaid queens, Kausalya and Sumitra, asleep at that time, the inmates of the gymnasium concluded that King Dasharatha had breathed his last while asleep. ततः प्रचुक्रुषुर्दीनाः सस्वरं ता वरांगनाः करेणेव इव आरण्ये तान प्रच्युत यूतपाः। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यंत्र चले जाने पर हथनियां करुण चीत कर करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। Then those pretty women loudly wailed, afflicted as they were, like female elephants in a forest,
the leader of whose herd had strayed away from their abode. तासाम् आक्रान्तशब्देन सहसोद्गतचेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वह दोनों सहसा जाग उठी। Roused all of a sudden by the noise of their wailing, Kausalya and Sumitra too shook off their slumber. कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा सुपृष्ट्वा च पार्थिवं हा नातेति परिकृष्य पेततुर्धरणीतले। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर को स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। Looking at the emperor and touching him and crying loudly, "Ah, my lord," Kausalya and Sumitra too dropped to the ground. सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले न भ्राजते राजोद्वस्ता तारेव गगनच्युता। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका दूसरे शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। Tossing on the floor and covered with dust, that daughter of the ruler of Koshala, a principality of that name to the south of the kingdom of Koshala and later merged in it, did not look charming any more than a shooting star fallen from the heavens. नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि अपश्यन् स्ताः स्त्रियः सर्वा हतां नागवधूमिव। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। The king having expired, all those ladies beheld Kausalya fallen on the ground like the dead wife of a Naga, a semi-divine being credited with a human face with a serpent-like lower extremities. ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखाः स्त्रियः रुदन्त्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतचेतनाः। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की कई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। Then the king's wives, Kaikeyi and others who were all weeping, sore stricken with grief as they were, fell down, consciousness having departed from them. ताभिः स बलवान् नादः क्रोशान्तिभिरनुद्रुतः येन स्फीतीकृतो भूयः तत् गृहं समनादयत्। उन क्रंदन करती हुई रानियां वहां पहले से होने वाले प्रबल अर्थनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़े हुए अर्थनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। That tremendous noise already heard in the gymnasium was supplemented by those wailing ladies by means of their own lamentation, swollen by which it rendered the house all the more noisy. तत् परित्रस्त संभ्रांत पर्युत्सुक जनाकुलं सर्वतस्तु मूलाक्रंदं परितापार्थ बांधवम् सद्यो निपतितानंदं दीनं विक्लव दर्शनं बभूव नरदेवस्य सद्म दिष्टान्तमीयुषः। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्य से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वे सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। That gymnasium of the king, who had now met his appointed end, was thronged with men and women who felt greatly alarmed, flurried and overexcited, was filled with a tumultuous wail on all sides and crowded with the king's relations who were stricken with deep agony. Joy had suddenly disappeared from it, and it wore a miserable aspect and presented a perplexed appearance. अतीतम् आज्ञाय तु पार्थिव ऋषभं
यशस्विनं तं परिवार्य पत्न्यः भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहु व्यलपन्नाथवत्। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी और जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। Concluding, the illustrious Dasharatha, the foremost of kings to be deceased, and surrounding him on all sides, his consorts for their part were profusely shedding tears, greatly afflicted as they were, piteously wailed like helpless women, clasping his arms. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 65 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।